visit and encourage our students. This is nothing an effort for them to create and foster creativity. All the 5 students of class 5, 6 and 7, you can see them, they will be performing now. আমরা এখন ছোট ছোট বাচ্চাদের দিয়ে একটি বসন্তের ওপর ছোট্ট একটা প্রয়াস করার চেষ্টা করছি। আপনারা দেখুন, নিশ্চয়ই খুব উপভোগ করবেন। আমরা এই বসন্তের আভাস অসমীয়া সুরেও দেখতে পাবো, আর তার সঙ্গে বাংলার নিজস্ব লোকগান মিশিয়ে একটা ছোট্ট স্ক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছে। কাল ছিল ডাল খালি, আজ ফুলে যায় ভরে। বল দেখি তুই মালি, হয় সে কেমন করে? এই আশ্চর্য ঘটনাটি সম্ভব হয় যে জাদুকাঠির ছোঁয়ায়। তার নাম বসন্ত, ঋতুরাজ বসন্ত। গ্রীষ্মের দাবদাহ, বর্ষার অঝোর
along in a rapid movement. And then we have facts and all.
Just a second. একটু সাইডে যাও আরেকজন তো আরেকজন নিচে গেছে। Okay, that's Welcome to Milaj, a day for learning. Goddess Saraswati, revered as the epitome of wisdom and learning, transcends cultural boundaries, symbolizing the pursuit of knowledge across civilizations. The seeds of learning sown in ancient India flourished in renowned institutions like Nalanda, Takshashila and Vikramshila, which attracted scholars worldwide. These centers embodied Saraswati's ideals, fostering diverse intellectual traditions, including Buddhist, Vedic, and secular studies. The influence of Buddha's teachings on wisdom and enlightenment played a significant role in shaping this institution. His emphasis on rational inquiry resonated deeply in Buddhist monastic education. The Milinda Panha, a dialogue between King Milinda and the monk Nagasena, reflects this intellectual tradition, showcasing the logical discourse and physiological depth. Nagasena, embodying Saraswati's spirit, used reasoning to explain Buddhist doctrines, blending faith with intellect. This exchange highlighted the fusion of Greek and Indian thought, reinforcing the transcultural impact of learning. The Saraswati's legacy endures, inspiring the continuous quest for wisdom across cultures. The Milinda Panha is a classical text written in the form of dialogue between King Milinda, a Greek ruler of the Indo-Greek kingdom, and the Buddhist monk Nagasena. The name itself reflects the nature of the text. Milinda refers to the King Milinda Muzandar I, who was known for his intelligence and curiosity. Panha means questions or inquiries, representing the deep philosophical questions Milinda asks. This text is a profound discussion on the Buddhist philosophy, covering topics like the nature of the self, rebirth, impermanence, and wisdom. A poem to understand Milinda Panha. The king inquires, the sage explains. A river flows, yet not the same. No chariot exists, yet wheels still turn. From wisdom's fire, true knowledge burns. Not by name, nor by form, does the self remain or stay. Like waves that dance upon the sea, all things must pass away. This poem reflects the essence of the Milinda Panha, emphasizing impermanence, selflessness, and the pursuit of wisdom. It teaches he who conquers 1,000 men in battle
is not greater than he who conquers himself. That is, wisdom is the greatest weapon, and self-mastery is the ultimate victory. Now we are about to witness the play Beyond the Sword, the Triumph of Wisdom. We welcome you all to the grand court of King Milinda. Long ago, King Milinda sought the wisdom of the enlightened monk Nagasena. He wished to understand the deepest truths of life. Who is this monk, Nagasena? He is wise beyond measure. My lord, besides the monastery, shall I summon him? I must test his wisdom. Yes, let us see if his wisdom can match my reasoning. Nagasena will enter along with his other monks and ministers. My lord, he is Nagasena. So you are Nagasena. Tell me, monk, what makes a man truly wise? Okay, as a water pot that is full makes no noise, so to thus a wise man remains happy. But the half-filled pot, that is the foolish man, making much noise. True, wisdom can be found in silence and humility. Now, tell me, monk, what is the nature of inspiration? O king, inspiration arises when one sees others set free and aspires to reach the same heights. By confidence, he crosses over the flood. By vigilance, the sea of life. By steadfastness, all grief he stills. By wisdom, he is purified. So, inspiration is the fire that leads one to enlightenment. Monk, what is true modesty? The blessed one said, control of the body is good. Good is control of speech. Control of the mind is good. Good is control in everything. Modesty is not weakness, but strength in self-discipline. Monk, tell me, what is wisdom? Wisdom is like a lamp, making all things visible. When wisdom springs up in the mind, it dispels the darkness of ignorance and makes the noble truths plain. Wisdom is the light that guides the soul. Now the ultimate realization of the king. I renounce all the pride and seek refuge in wisdom. May I follow the path of truth. Yes, truth is the conquest of the self. Thus, King Milinda, once a seeker of knowledge, became a true disciple of wisdom, proving that the greatest battle is the battle within. The moral of the play is true victory in life does not come from power, wealth, or work, but from wisdom. Just as a chariot moves only when all its parts work together, life moves forward only when guided by knowledge, patience, and virtue. The greatest battle is not against enemies, but against our own ignorance, desires, and fears.
we will make this session interactive one. So it will more motivate you. I had asked by the madam to motivate the student. I think our interaction with the student will motivate more. So Hindi will be comfortable? Or English will be comfortable? I think English will be better one. So good to go. I love the presentations and I'm happy to
see that students are thinking that are they these ideas of only students or teacher have? Okay, you are. Starting from that organic Abhi to the reuse one, I am happy to see that this young generation is understanding the use of the resources or say reuse of the waste material to a well. See, this is the project that we are thinking of from several years, waste to well. You all must have heard waste to well. What is waste to well? Anyone? Koi bhi? Don't be shy. Can we make a question? What do you understand from waste to well? From waste we recycle and like plastic we can reuse and make something else from that. That is one. Okay. Anyone? From waste material we can also think some different ideas and make something like this in plastic bottles used for top or decorating top and make this Plastic you use is perfectly fine. Anything else? So we can use the materials which we actually throw in our business as natural fertilizers like eggshells, banana peels. Number 2, that's good. Number 3, we should not throw garbages in the river because river is a wonderful creation of God and we should respect that creation in our heart. see, this is the beauty. What the young generation have, and we as a teacher or we as a scientist have to explore. All these programs has been launched by Government of India far back. So all are correlated with the great schemes of the Government of India. Number 1. Number 2 is that if you all guys are aware to that extent, so the solid waste disposal will automatically be resolved. Had you understood what the solid waste disposal is? Anyone? Solid waste disposal? बोलो बच्चों. See, teachers are also coming from the same test, and I am also coming from the same test. One day you will be standing here, and the next generation of students will be there. This is how hierarchy moves. Anyone? Any idea? Even a raw idea, or say, I can say an idiotic idea also. Sometimes idiotic idea turns to be a great innovation. Anyone? We can use the solid waste from plant. What you understood from the solid waste? Peels of vegetables and shells of eggs and fish of the fishes we eat or those can be the solid waste, and if we use them as natural fertilizers, then the pollution will be a little bit less. Organic fertilizer, or I can say a manure. Okay, that is one aspect. Number 2. Anyone? What she said, the peels of banana or the eggshells, we can decompose them and use them as manure. Instead of using the fertilizers and pesticides, whatever we use for the plants and for farming, the fertilizer and the pesticides, the pesticides that we use are causing harm to our nature. So instead of them, we can use the manure. We can use the wastage of banana as a boiled rice, the water of the boiled rice, give to the plant which is more comfortable to make them food and giving us the vegetable and food in our body. And we Acha. At home, you guys dispose all waste together, or you have a two dustbin?
40 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 40 degrees, we can measure our health in our comfortable environment. This is the help of us. Let's start. Good afternoon, everyone. Welcome to our psychology department. We have with us today. This year, our department is celebrating the concept of art therapy. Before going into art therapy, we need to understand what is therapy. According to psychology, therapy refers to a method aimed at helping individuals address and overcome behavioral and mental challenges. There is a clear distinction between artwork and art therapy. Artwork basically refers to personal recognition as a part of our hobbies, whereas art therapy, on the other hand, is aimed at helping individuals who have gone through something traumatic in the past, or people who are suffering from cognitive illnesses, developmental disorders, or chronic illnesses such as cancer and asthma. It also aims at helping individuals who have issues with expressing themselves and understanding or communicating with others. Our aim is to help these individuals and bring them back to a normal life. Thank you. Now, what is therapy? Therapy is a treatment process that helps individuals improve their mental, emotional, or physical well-being with professional guidance. Now, we are going to discuss about art therapy. Art therapy is a form of psychotherapy that uses artistic methods to help individuals express emotions, relieve stress, and enhance self-awareness. Now, there is a huge difference between artwork and art therapy. Artwork is typically done for personal expression, aesthetic enjoyment, or as a hobby. The focus is on the final product or the creative process itself. Coming to art therapy, it uses art as a therapeutic tool to improve mental and emotional well-being under professional guidance. Now I am handing
traumas, developmental disorders, chronic illness, cognitive decline, and those individual has on the way to his success. The roots indicate the past hobbies that he or she had but doesn't like them at present. This area shows the present life of the individual. The trunk is the most important part of the tree. It represents the goals, achievements and interests of the individuals. This area shows the dreams. The branches emerge out from the trunk and represent the positive things of the life of an individual. The leaves indicate the people who matter the most to the person in times of need, with whom he or she can share his feelings, emotions or thoughts. This gratitude tree represents that in our way to success, our problems or struggles often Dramatist, novelist, and also a great short story writer, remains famous for his works like The Picture of Dorian Gray, The Importance of Being Honest, The Young Kid, The Happy Prince, and The Selfish Snake, and many more. Morality criticism of social hypocrisy and good sense winning over negative human qualities are some of the rampant themes in his works. Today, we are going to experience a glimpse of wild short stories. The selfish giant on the stage. The giant, who is initially selfish, builds a high wall around his garden to prevent the children from entering it. Later, he undergoes a drastic transformation and realizes that it is a season of spring in his garden only because of the presence of the children. The giant sees the most wonderful sight. The children, after creeping into the garden through a little hole in the wall, are playing, sitting on the branches of the trees. The birds are flying about in delight. The trees are covered with blossoms. It is a lovely scene. I am seeing the most wonderful sight. I can't believe that spring is already here. But how is it possible? I think the children came into the garden. That is why spring has also arrived. Hey boys! But the children are terrified when they see the giant and try to escape. Hey children, don't go away. I may be a child, but now I'm your friend. The children stop, look at one another. The giant comes closer to them. Look, I may be a child, but I have changed a lot. You can consider me as your friend and play here whenever you wish. The children look very happy. They start playing, but a kid too young cannot play. The giant notices him. Hey, little one, why are you not playing? I am too small. Okay, I will play. The giant starts playing with the little child. Another day, the children are playing in the garden. The giant is looking for someone. Hey, where is he? Who? Your little companion? I don't understand who you are talking about. The little kid. I played with him yesterday. I don't see him here right now. Okay, please play. But be sure to tell him to come here tomorrow. I love him the most because we have played together. Days pass. The giant grows very old and feeble. He cannot play about anymore. He sits on a huge armchair and watches the children at their games and admires his garden. I have many beautiful flowers, but the children are the most beautiful
flowers in my garden. Suddenly, the little kid enters the stage. The giant notices him. He is surprised and runs towards the little kid. Little friend, why are you all this way? Then noticing the arm of the little boy, his face grows red with anger. Who dared to hurt you? I can see prints of 2 nails on your palm and also on your feet. Tell me who it is. I shall take my sword and slay him. Hey, these are the wounds of the... Who are you? The giant kneels before the little kid. Once you have allowed me to play in your garden, today you shall go with me. My garden, the paradise. The story has multiple layers of meaning. It is open to so many interpretations, but the main message is, of course, love conquers all. Don't you think? We can make the world a much better place to live in only with love, acceptance, and tolerance. Hatred, selfishness, intolerance are the sowing seeds of destruction. Only by doing away with such things we can make a better world, stronger bonds, and a beautiful future. Thank you. उड़ी जाए रे बसंती चुनन सन से उड़ी जाए। बसंत ऋतु भारतीय पंचांग की 6 ऋतुओं में से एक है। ऋतुराज बसंत हमारा आज का विषय है। इसी बसंत को केंद्र करके हम अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यह ऋतु शरद ऋतु के बाद आती है और नए जीवन शक्ति और सौंदर्य लाती है। बसंत प्रकृति और मानव मन की संयुक्त उमंग का महापर्व है। प्रकृति अपने समस्त श्रृंगारों के साथ बसंत का अभिनंदन करती है। ऋतुराज बसंत के आगमन के साथ ही प्रकृति जीवंत और चंद्रमन को उठती है। कुसुम कलिकाओं की सुगंध से वातावरण गमक उठता है। बसंत की यह मधुर तरंग मनुष्य के रग-रग में आनंद और उल्लास की स्फूर्ति भर देती है। बसंत के आगमन से शीतकालीन जड़ता समाप्त हो जाती है। बसंत के नव परिवेश में मानवीय इच्छाएं, आशाएं और कामनाएं अंगड़ाई लेती है। बसंत ऋतु में प्रकृति अपने पूरे शबाब पर होती है। फूलों की खेती हर जगह दिखाई देती है और उनकी सुगंध वातावरण में महकती है। पेड़ों पर नए पत्ते निकलते हैं और उनकी हरियाली दिल को खुश कर देती है। जाए
आज बसंत। पेड़ों पर पत्ते नए, डालों पर पक्षी भी नए हैं। गाय निकले, समझ गई मैं, आ गया बसंत। माँ शारदा की आराधना, शिव का जल अभिषेक, होली के रंग बिरंगे रंग लोगों को रंगने देखो, आ गया बसंत। मन में फूटे फूल पलाश के, देखो आ गया बसंत। हर तरफ रौनक, हर तरफ खुशियों का माहौल, त्योहारों से भरा बसंत, देखो आ गया बसंत। खेतों में फसलें कटने को तैयार, पेड़ों में लगे फूल फल बनने को आतुर। आम कटहल जामुन कहते हैं हम आने वाले हैं। हर तरफ पक्षी गाए नए गीत, परदेशों के सीख तपिश से बचने को आए हमारे यहाँ रंग बिरंगे पक्षी। पर्यावरण हंसकर स्वागत करने को तैयार, देखो आ गया बसंत। बसंत ऋतु का महत्व न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए है, बल्कि यह ऋतु कई त्योहारों और उत्सवों का भी समय है। यह ऋतु हमें प्रकृति के साथ जोड़ने और उसकी सुंदरता का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। बसंत पंचमी पर ज्ञान, विद्या और कला की देवी सरस्वती माँ का पूजन किया जाता है, जिससे मानव मन उत्साह और उल्लास के साथ आत्म ज्योति को प्रज्वलित कर सके। वह तमस से प्रकाश की ओर और अज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ सके। सभी धर्मों के लोग इसे मानते हैं। सरस्वती पूजन बसंत की उमंग के साथ त्याग और आनंद का पर्व है। बसंत में जीवन से आशा, उत्साह, उमंग से भरा रहे और विद्या बुद्धि का समुचित समायोजन रहे, तभी इसकी सार्थकता सिद्ध होती है। सर्दी की विदाई और बहार के स्वागत का प्रतीक है बसंत पंचमी। हवा में खुशबू, पेड़ों पर नए पत्ते, चारों ओर पीले रंग की पत्तियां, छटा, सब कुछ मन को मोह लेती है। पीले रंग की चादर धरती पर बिछ जाती है। बसंत पंचमी हमें सिर्फ प्रकृति की सुंदरता नहीं दिखाती, बल्कि जिंदगी की नई शुरुआत करने की सीख भी देती है। सर्दी का कड़ाके का आलिंगन धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है और प्रकृति अपने हरे रंग का जादू चारों ओर बिखेर देती है। पत्ते, पेड़ों पर नई पत्तियां फूटती हैं, मानो प्रकृति अपने नए साल की शुरुआत का गीत गा रही हो। बसंत आए, बसंत यह ऋतु आए, चारों ओर खुशियाँ लाए। रंग बिरंगे फूल है खिलती, खेतों में सरसों लहराती, फूलों पर तितली मंडराए, मस्ती से भौरे गाए। पीले वस्त्र पहने बच्चे, नाचे गाए खुशी मनाए। अलसी की शोभा है निराली, कोयल कूके डाली डाली। खुशी मनाए हम पूरे दिन भर, आए बसंत यह ऋतु आए। बसंत के आते ही नवल मुग्धा प्रकृति नवीन रूप धारण कर उसका स्वागत करने लगती है। सूखी टहनियों में भी कपोले फूल पड़ते हैं। पेड़ पौधे अरुण कोमल पत्तियों से सज जाते हैं। अमरानियां सुगंधित मछलियों से लग जाते हैं। कोयल पंचम स्वर में गूंजने लगती है। पपीहे उस कुकू में अपनी कनकी उठा सोने लगते हैं। फूल मकरंद कानों से लग जाते हैं। तितलियां फूलों की रंगीन पंखुड़ियों से थिरकने लगती हैं। मयूर झूम झूम कर नाच उठते हैं। जड़ चेतन वसंत के मादक स्वर से निहाल हो उठते हैं। बसंत ऋतु सुंदरता पर सक्रियता की जीत की निरस्ता पर सरसता की विजय का नाम है बसंत ऋतु। रंग, रस और नाद के मेल से बसंत ऋतु की रचना हुई है। किसी भी समय जब हम प्रसन्न, प्रफुल्ल और आनंदित होते हैं, हमें समझना चाहिए कि
वसंत ऋतु ने अपनी धड़कनों का मधुर गीत हमारे भीतर उड़ेला है। Yeah.
the thickness in the cell. And that's how isostasy works. And thus he explained that how isostasy is related to the plate tectonic theory. The plate tectonic theory came into existence. As we know that the plate tectonic theory and the continental drift theory are interrelated. The continental drift theory suggests that all the continents that we live upon were part of a single বসন্ত পরিবেশনায় নবম এবং দশম শ্রেণীর ছাত্রীরা। মা ও ভাই বোনের সন্ধিক্ষণে প্রাক বসন্তে আমরা দেবী সরস্বতীর পূজা দিয়ে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠি। তাই তাকে কেন্দ্র করে আমাদের অনুষ্ঠানের সূচনা অন্তরতর বসন্ত। দেবী সরস্বতী জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী, কিন্তু আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সরস্বতী নামকরণের উৎসে যে সরস শব্দটি আছে তার অর্থ জল। সেই পথ ধরে দেবীর প্রকৃত উৎসে পৌঁছানো যায় সহজে। নদী মানুষের জীবনে সর্বরকম সহায়তা করে বলেই মানুষ আন্তরিকভাবে নদীর রূপা শক্তিকে বন্দনা করেছে যুগে যুগে। মধ্য এশিয়ার রুক্ষ জলহীন প্রদেশের আর্যরা ভারতবর্ষে এসে তৎকালীন সপ্ত সিন্ধুর অন্যতম নদী সরস্বতীকে আশ্রয় করে জীবনকে বহমান রেখেছিল। তাই সরস্বতী প্রাথমিক পর্বে নদী রূপে পূজিতা হলেন। পরবর্তীকালে নদীর তীরে বিবিধ জ্ঞানযজ্ঞ এবং শিক্ষাশ্রমের কারণে এই দেবী হয়ে উঠলেন বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
সরস্বতী পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্মেও এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। তিনি একাধারে জ্ঞান, সুর ও প্রজ্ঞার দেবী, আবার একই সঙ্গে তিনি রক্ষাকর্তা। জ্ঞান ও ভক্তমানব উভয়কেই তিনি রক্ষা করেন। মহাযান বৌদ্ধ মতে তিনি প্রজ্ঞাপারমিতা বা বজ্রতারা। বৌদ্ধ ধর্মের হাত ধরে তিনি ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে পৌঁছে গেলেন নেপাল, তিব্বত, থাইল্যান্ড, বালি, এমনকি জাপানেও। সরস্বতীকে কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী শারদা মঙ্গল কাব্যে প্রেম, বিরহ, সৌন্দর্যের রূপকে নিজের বরের বিচিত্র রূপের উপলব্ধি করেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কল্পনায় সেই শারদাই হয়েছে স্নিগ্ধতার প্রতিমূর্তি। কবি দেবীকে অন্তরে স্থান দিতে চান, অধীর আকাঙ্ক্ষায় আহ্বান করেন। হৃদয় কমল
দেবী কালীর প্রতিকূলে প্রেম, করুণা, সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি দেবী সরস্বতীকে স্থাপন করলেন। আমাদের সকলের হৃদয়ে সেই মূর্তি প্রথিত হল। দেবী সরস্বতী যেমন জ্ঞানবিদ্যা এবং কলাবিদ্যার দেবী, তেমনই আবার নৃত্য ও সঙ্গীত কলার সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবের চোখটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিবের নটরাজ মূর্তি সেই সঙ্গীত কলা সৃষ্টির প্রতীক। হিন্দু পুরাণ মতে শিবের নৃত্যের দুটি অঙ্গ, তাণ্ডব ও লাস্য। শিব মহাকাল বেশে ধ্বংসাত্মক যে নৃত্য সৃজন করে তা তাণ্ডব, এবং লাস্য হল মধুর ও সুচারু নৃত্যকলা, যাকে পার্বতীর নৃত্যরূপ হিসেবে কল্পনা করা হয়। নটরাজ মূর্তির মধ্যে এই দুই রূপই বিদ্যমান। নটরাজ মূর্তির চারটি হাত, ডান হাতে দমন, যা সৃষ্টির প্রতীক। অপর ডান হাতে বরাহর মূর্তি, যা জগতের প্রতীক, আশীর্বাদের প্রতীক। বাঁ হাতে অনন্ত আগুন, এটি আবার ধ্বংসের প্রতীক। আর আরেকটি বাঁ হাতে পরিত্রাণের প্রতীক। সব মিলিয়ে তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা, এ বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। নটরাজ মূর্তিতে শিবের ঐশ্বরিক নৃত্যরূপ যেন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক রূপে সর্বত্র মান্যতা পেয়েছে। তালে তালে
সেটা হয় মূলত ঋতুরাজ বসন্তে। প্রকৃতির আনাচে কানাচে এত রং, প্রাণীকুলের মনেও রং ধরায়। দুতলা ফাগুনে ফুলের বনে অলির গুঞ্জন, লতায় পাতায় সোহাগী ফুল রেণু, প্রকৃতি বিনায় রাগ বসন্ত পাহাড়ের সুর ঘনিয়ে তোলে। আলো ছায়া দোলায় ঋতুরাজের অভিষেক ঘটে। ভালোবাসার বাঁধনে বাঁধা পড়ল। বনে বনে অশোক, পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া, কনকচূড়ার আবির মেখে ফাগুন হাওয়ার দোল ছড়ানো খেলার সঙ্গী হয়ে। কেজো জগৎ থেকে মুক্তির খোঁজে আমরা বাঁধনহারা প্রাণের আনন্দে মেতে উঠি। উদাস চোখে স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমরা ব্যক্তিগত দুঃখ সুখকে অতিক্রম করার শক্তি অর্জন করি। আর তখনই এই সব কিছুর নিয়ন্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলতে ইচ্ছে করে